বাংলা টিভির নিবেদন নৃত্যের অঙ্গনে সকল নৃত্যগুরু, নৃত্যশিল্পী ও নৃত্যপ্রেমীদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সান্ধ্যকালীন অভিনন্দন। আমরা পৌঁছে গেছি নবম পর্বে। আজকের উপস্থাপনা মোহিনীআট্টম। সাথে আছেন নৃত্যশিল্পী অনুশ্রী কুণ্ডু। অনুশ্রীকে জানাই ডি বাংলার পক্ষ থেকে অজস্র অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। প্রত্যেকবারের মতো এই পর্বেও আমরা মোহিনীআট্টম সম্পর্কে সামান্য কিছু তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরব। মোহিনীআট্টম কথিত আছে, পুরাকালে দেবতারা মোহিনীর ছদ্মবেশ ধারণ করে বিভিন্ন সময়ে দৈত্য ও অশুভ শক্তিকে বিনাশ করেছিলেন। এ সম্পর্কে বিভিন্ন গল্প প্রচলিত আছে। যেমন সমুদ্র মন্থনকালে ক্ষীরসাগর থেকে উদ্ভূত সমস্ত ভালো জিনিস দেবতারা নিয়ে নিচ্ছিলেন। দৈত্যরা কিছুই ভোগ করার জন্য সংগ্রহ করতে পারছিলেন না। এইরূপ লক্ষ্মীদেবী যখন আবির্ভূত হয়ে বিষ্ণুর পাশে স্থান নিলেন, তখন দৈত্যরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল এবং দেব চিকিৎসক ধন্বন্তরী অমৃত পাত্র নিয়ে এলে সেটি তারা ছিনিয়ে নিল। এইরকম ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে ভগবান বিষ্ণু মোহিনীর ছদ্মবেশে আবির্ভূত হলেন। তার সমস্ত সৌন্দর্য মায়ায় আবিষ্ট হয়ে যখন দৈত্যরা চোখ নিমিলিত করল, সঙ্গে সঙ্গে মোহিনী অমৃতের পাত্র নিয়ে অন্তর্ধারণ করল। মাধুর্যমণ্ডিত গীতিধর্মী এবং কমনীয় নৃত্য মোহিনীআট্টমের নামের সূত্রপাত এখান থেকেই বলা যেতে পারে। তো মূলত নারী কেন্দ্রিক। কোনো এক সময় যখন মেয়েরা কাথাকলি নৃত্য করত, তখন মেয়েদের এক ঘরে করে দেওয়া হয়েছিল। ঠিক সেই সময় মেয়েদের জন্য দাসীআট্টম নৃত্যের প্রচলন হল, যা অন্যান্য শাস্ত্রীয় মতো মন্দিরে পরিবেশন করা হতো। পরবর্তীকালে ত্রাভানকোরের মহারাজা কার্তিক তিরুনাল রামধর্মা খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকে কেরালা এই দাসীআট্টম নৃত্যকে মোহিনীআট্টম নৃত্যে রূপান্তরিত করেন। এইরূপ এই মোহিনীআট্টম নৃত্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান মহাকবি ভাল্লাথোর নারায়ণন মেনন। 1930 সালে গড়ে তোলেন কেরালা কলামণ্ডলম। এই কাজে তিনি মুকুন্দরাজের পুরনো শৈলীর কুশলী কল্যাণীকুট্টি আম্মাকে পান এবং পরবর্তীকালে 1934 সালে কেরাল থেকে এই নৃত্য কল্যাণীকুট্টি আম্মাকে নিয়ে আসেন শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শাস্ত্রীয় নৃত্যের পাশাপাশি এই নৃত্যের স্থান দেওয়া হয় শান্তিনিকেতনে। বর্তমানে কেরালায় অন্যান্য শাস্ত্রীয় নৃত্যের মতনই মোহিনীআট্টম একটি প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্রীয় নৃত্য। আমরা এখন চলে যাব শিল্পীর প্রথম উপস্থাপনায়। তার আগে শুনে নেব শিল্পীর কাছে কিছু কথা। নমস্কার, আমি অনুশ্রী কুণ্ডু, একজন মোহিনীআট্টম নৃত্যশিল্পী। মেঘমল্লার আয়োজিত ডি বাংলার আমন্ত্রণে আজকে আমি হাজির হয়েছি। সুচেতা দিদিকে আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য অনেক ভালোবাসা ও ধন্যবাদ জানাই এবং সুচেতা দি ও ডি বাংলার ফুল টিমকে আগামী দিনে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই। দেখছেন ডি বাংলা টিভিতে নৃত্যের অঙ্গনে। সাথে আছেন নৃত্যশিল্পী অনুশ্রী কুণ্ডু। আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে অনুশ্রীর কাছে কিছু কথা শুনে নিলাম। এখন চলে যাব তার প্রথম উপস্থাপনায়। রাগম রাগমালিকা, তালম তালমালিকা। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते
चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिरे सल्ग चक्रं गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते सल्ग चक्रं गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्ते गरुडारूढे कोलासुर भयंकरी नमस्ते गरुडारूढे कोलासुर भयंकरी नमस्ते गरुडारूढे कोलासुर भयंकरी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुःख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते बुद्धि प्रदे देवी मुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ति सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी मुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ति सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते
आदिन्दरहिरे देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महाधरे महाभावहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिरे जगस्थिरे जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी महालक्ष्मी नमोस्तुते 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 আমরা দেখে নিলাম অনুশ্রীর প্রথম উপস্থাপনা। ডি বাংলা টিভির পক্ষ থেকে অনুশ্রীকে জানাই অজস্র ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। এখন আমরা শিল্পীর পরিচিতি জেনে নেব। শিল্পী অনুশ্রী কুণ্ডু, বাবা মাননীয় শ্রী হরি কুণ্ডু, মা মাননীয়া শ্রীমতী তাপসী কুণ্ডু। শিল্পীর বেড়ে ওঠা কলকাতার বরানগরে। অনুশ্রী 10 বছর ধরে মোহিনীআট্টম নৃত্যে তালিম নিচ্ছেন গুরু শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী আচার্য মৈত্র মহাশয়ের কাছে। শিল্পীর অ্যাচিভমেন্ট: ভারত সংস্কৃতি উৎসব 2018 got second prize in Mohiniyattam senior competition.
participated in West Bengal Dance Federation 2019 Festival, Hidden Language Festival at ICCR 2019, Bishnupur Festival 2019 at Judubhatto Manchi, Shankar Classical Dance Festival 2020 at Bhubaneswar Bhanjukala Mandir। এছাড়াও শিল্পী বিভিন্ন রাজ্য ও দেশ জুড়ে বড় বড় সম্মান অর্জন করে অনন্য নৃত্যশিল্পী হয়ে ওঠেন। বর্তমানে অনুশ্রী কুণ্ডু একজন প্রতিষ্ঠিত নৃত্যশিল্পী, কোরিওগ্রাফার এবং ডান্স টিচার হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন। এখন আমরা চলে যাব শিল্পীর দ্বিতীয় নৃত্য উপস্থাপনায়। ಕಿಟತಗ ತಿಮಿಡ ಪುರದಾರೆ ತಿತ್ತಾರೆ ತಿತ್ತರೆ ಕಿಟತಗ ತಿಮಿಡ ಪುರದಾರೆ ತಾರೆ ತಕ ತಾರೆ ತಕ 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 ತಾರೆ ತಾರೆ ತಕ 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 ತಾರೆ ತತ್ತಾರಿ ತತ್ತರಿ ಕಿಟ ತಗ ತಿಮಿಡ ಪುರದಾರೆ ತಿತ್ತಾರೆ ತಿತ್ತರೆ ಕಿಟ ತಗ ತಿಮಿಡ ಪುರದಾರೆ ತಾರೆ ತಕ ತಾರೆ ತಕ 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 ತಾರೆ ತಾರೆ ತಕ ತಾರೆ ತಕ 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 ತಾರೆ ತತ್ತಾರಿ ತತ್ತರಿ ಕಿಟ ತಗ ತಿಮಿಡ ಪುರದಾರೆ ತಿತ್ತಾರಿ ತಿತ್ತರಿ ಕಿಟ ತಗ ತಿಮಿಡ ಪುರದಾರೆ തുമ്പിക്കൈയാട്ടി ഒറ്റ കൊമ്പിളക്കി തുമ്പിക്കൈയാട്ടി ഒറ്റ കൊമ്പിളക്കി തുമ്പിക്കൈയാട്ടി
ഒറ്റ കൊമ്പിളക്കി നടമാടും ആനന്ദ ഗണപതിയേ പരമാനന്ദ ഗണപതിയേ 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 താണ്ഡവം ശിവതാണ്ഡവം പരമാണ്ഡവൽ നീയേ താണ്ഡവം ശിവതാണ്ഡവം പരമാണ്ഡവൽ നീയേ പരമപുരുഷ തക്കിട്ട തക്ക തരെ കിട്ട താം കിട്ട തക്കിട്ട ധിത്തി തേ ധിക്കിട്ട തക്ക തരെ കിട്ട താം കിട്ട ധിക്കിട്ട ധിത്തി തേ തോം കിട്ട തക്ക തരെ കിട്ട താം കിട്ട തോം കിട്ട ധിത്തി തേ നം കിട്ട തക്ക തരെ കിട്ട താം കിട്ട നം കിട്ട ധിത്തി തേ തക്കിട്ട തക്ക തരെ കിട്ട താം കിട്ട ധിക്കിട്ട തക്ക തരെ കിട്ട താം കിട്ട ഓം കിട്ട തക്ക തരെ കിട്ട താം കിട്ട നം കിട്ട തക്ക തരെ കിട്ട താം കിട്ട തക്കിട്ട തക്ക ധിക്കിട്ട തക്ക ഓം കിട്ട തക്ക നം കിട്ട തക്ക തക്കിട്ട തക്ക ധിക്കിട്ട തക്ക ഓം കിട്ട തക്ക നം കിട്ട തക്ക തരെ കിട്ട കിട്ട തക്ക തീം തീയം ജീയം തക്കിട്ട കിട്ട തക്ക ഹിത്താതിമൃത താണ്ഡവം ശിവതാണ്ഡവം കനവൊളിയിൽ നിനവൊളിയിൽ ഹൃദയമിടും മിടിമിടിയിൽ കനവൊളിയിൽ നിനവൊളിയിൽ ഹൃദയമിടും മിടിമിടിയിൽ ഗണപതി ഗണപതി ചിന്തും അവിനാശമന്ത്രവിളി കൊണ്ടു വന്നുദിക്കണേ ചിന്മയ ഗുരുവേ ചിന്തും അവിനാശമന്ത്രവിളി കൊണ്ടു വന്നുദിക്കണേ ചിന്മയ ഗുരുവേ ആനന്ദ ഗണപതിയേ പരമാനന്ദ ഗണപതിയേ 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 തത്താരി തത്തരി കിടതകതിമിട പുരതാരേ ചിത്താരി ചിത്തരി കിടതകതിമിട പുരതാരേ താരേ തക താരേ തക 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 താരേ താരേ തക താരേ തക 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 താരേ തത്താരി തത്തരി കിടതക തിമിട പുരതാരേ ചിത്താരി ചിത്തരി കിടതക തിമിട പുരതാരേ തിമിട പുരതാരേ തിമിട പുരതാരേ തിമിട പുരതാരേ തിമിട പുരതാരേ തിമിട പുരതാരേ തിമിട പുരതാരേ
আপনারা দেখলেন ডি বাংলা টিভি নৃত্যের অঙ্গনে নৃত্য অনুষ্ঠান। সাথে ছিলেন মোহিনীআট্টম নৃত্যশিল্পী অনুশ্রী কুণ্ডু। অনুশ্রীকে জানাই অজস্র ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। সেই সাথে দর্শক মণ্ডলীকে জানাই শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন। অন্যান্য বারের মতো এবারও কমেন্ট ও শেয়ার করতে ভুলবেন না। সেই সাথে যারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন 142 জন মানুষ, তাদের প্রত্যেকে জানাই অজস্র ধন্যবাদ। আবার দেখা হবে আগামী সপ্তাহে একই দিনে একই সময়ে। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। নমস্কার।